So, in yesterday's session, we did about about what? About all the species, keystone species, flagship species, right? Umbrella species. Any doubt? वहां तक कोई प्रॉब्लम आई आप लोगों को? Any sort of questions to be asked? Anyone? So, Yes. I just had a little query. Is that so the species that was introduced in Deccan in the cotton cultivation? Hmm. So why was it introduced in the first place? For the production, Okay, so it helps in the for higher production. amount of production, because see, it is in the similar way. Any species is introduced in any place, if it is intentionally, then the intention is not to destroy the local habitat. The intention is to boost the production. There are some specific qualities of some specific species by which the production can increase, so that so the alien species are intentionally added to the habitat just because of any specific quality. Cotton bug was introduced because of this. And yes, about the cotton bug, it was not intentionally, but it is a bug, which means it is a kind of what we say. It was unintentionally came from North America, right? And migration. Lakshmi Sahu, please अपना कैमरा ऑफ करिए, है ना? इंटेंशनली नहीं आया, वो अनइंटेंशनली आया, राइट? जिससे क्या हो गया कि वहां का जो लोकल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो गया. धन्यवाद. Clear, sir. Thank you. Okay. So, yes. Today we'll start about pollution. आज स्टार्ट करेंगे pollution पर. Okay. Sir, hello. Yes. Sir, yesterday you told you will start about those all Species. Kaziranga National Park and all those. Species. हाँ. National park. Sanctuaries, national parks due to APSC. What do you want? What do you want? The notes. नो नो, हाँ. आप बोल रहे थे ना कि कल मैं APSC का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो अभी पढ़ा दूंगा ये 15 तो दिन वही में. पढ़ा रहा हूँ ना, वही पढ़ाने जा रहा हूँ. नेशनल ठीक है सर. पार्क लिस्ट है, नेशनल पार्क की लिस्ट है, टाइगर रिजर्व की लिस्ट है, राइट? उस लिस्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी बात, राइट? ठीक है. हाँ, वो पूरी लिस्ट है, टाइगर रिजर्व्स की, बायोस्फीयर रिजर्व्स की, रामसर साइट्स की पूरी लिस्ट है. ओके. ठीक है सर. हाँ. मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, वेट करिए. इम्पेशेंट मत हो प्रताप. थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, आ जाएगा सब कुछ अच्छे से. चलो, आज हम बात करेंगे अबाउट पोल्यूशन. Pollution means what? Pollution means any unwanted change in the environment, right? In the environment, any kind of unwanted change in the environment by intentionally
or unintentionally introducing, clear, introducing any substance which can change, or we cannot say intentionally, it is unintentionally. Every time it is unintentionally, by unintentionally introducing, okay? Unintentionally, which can change the proportion or property of that ecosystem, right? The substance, समझो, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं. Substance is called pollutant, right? And the process is called pollution. Clear? अब समझो. Assume that in a particular area, right, we have each and everything: air, soil, water, right? Anything. These are basic constituents: air, soil, and water. Now what? Air is what? Air is atmosphere. Soil is lithosphere. And water is hydrosphere. Yes or no? Yes, it is hydrosphere. Now see what? Be it atmosphere, lithosphere, or hydrosphere, each and everything has a specific proportion. Right? अब इस proportion में अगर हम कोई चीज ऐड कर दे, जो क्या कर दे, इस proportion को चेंज कर दे, राइट, या इसकी प्रॉपर्टीज को वेरी करा दे, प्रॉपर्टी वेरिएशन हो जाए, then that thing is known as pollutant. The process is known as pollution. जैसे, for example, let's take an example of air. Now air has specific proportions of oxygen, nitrogen, and carbon dioxide, the primary gases. Yes, nitrogen, oxygen, and carbon dioxide. Let's take an example of carbon dioxide, primarily 0.036%. ये इसका proportion है. Now what happens if by anyhow the proportion of CO2 increases, right? So what will happen? We know that the property of CO2 is what? That it is heat trap, it has heat trapping property. ये क्या करता है? ये heat को trap करता है. Yes. अब ये heat को trap कर रहा है, it has a heat trapping property. It means what? If CO2 will increase, the heat trapping property also will increase. It means it will lead to global warming. If this specific property is maintained, it is called greenhouse, right? Which is
which is essential for life. But global warming will lead to destruction of life. Am I clear? It means the extra things which are enhancing the CO2 are known as pollutant, and this change is known as pollution. Similarly, if we consider about soil is what? Soil is a constituent of rocks. And rocks are what? Rocks are constituents of minerals. जब हम किसी शैल या चट्टान की बात करें, समझना वेरी इजी, पर ये जो रॉक्स हैं ये किसके मिलके बने होते हैं? ये मिनरल से मिलके बने होते हैं. जब इन रॉक्स में ईदर इरोजन या वेदरिंग का प्रोसेस होता है, या मैं सिंपल बोलूं ब्रेकडाउन हो रहा है, या इसी को अगर मैं साफ सही समझाऊं अगर, तो रॉक्स जो हैं वो क्या है? वो है कंपाउंड or a group of or a collection of minerals. What it? समझ में आ रहा है? अब क्या हो, इन रॉक्स का ब्रेकडाउन हो. What happens? Breakdown, weathering, or erosion. So by that this rocks becomes soil. Now whatsoever minerals are present in the rocks, those all are present in the soil also. Now what happens if the proportion of these minerals in the soil, they are in a particular proportion? What happens if this proportion increases or decreases? It will lead to soil destruction. For that, we can understand that the fertility of the soil depends on three things: nitrogen, not nitrogen but nitrates, phosphates, and potash or potassium, NPK. This NPK has to be in a particular proportion. And the fourth one by which we can decide it is humus और ऑर्गेनिक कंटेंट. किसी भी सॉइल का जो में ऑर्गेनिक कंटेंट जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस. एंड इट आल्सो डिफाइंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. इफ nitrates, phosphates, potash or humus increases or decreases, it will change the proportion of soil, and which will lead to soil destruction or soil degradation, by which it is known as soil pollution. ये मैं एग्जांपल आपको समेट रहा हूं, पूरा समझना पूरा. अभी मैं आपको एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करूं. Now, same goes for water. Okay, water is of two types on earth. It is in two phases.
surface water, it is found in two sources, by two sources, surface water and underground water. Surface water means it can be of two types, saline water and fresh water. Okay, according to movement, we can say that saline or fresh can be divided into still water or flowing water, but उसको नहीं रोकेंगे. Now consider it. The underground water is considered to be fresh water. Surface water में जो fresh water है, it can be pond, it can be lake, and the best example is a river separately. Saline water can be sea, ocean, lake, etc. अब समझो यहां पर, in each case, be it fresh, saline, in any case, water consists of some minerals, and these minerals are essential for life. For example, let us say an example. Seawater, which is also known as hard water. Why? Why? Because it consists of two things: carbonate and bicarbonates. बचपन में पढ़ा होगा, 9th 10th में 11th में पढ़ा होगा इसमें आपने, वो जो हमारा सलाइन वाटर होता है, नॉट ओनली सी वाटर बट ऑल द सलाइन वाटर्स, है ना. इसमें इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जिसकी वजह से द वाटर इज हार्ड. ओके, नाउ what happens if the hydrogen constituent increases in the sea water? Then what will happen? This carbonate and bicarbonate ये convert हो जाएंगे कार्बोनिक एसिड में. अभी मैं एक एक चीज को डिफाइन करूंगा, समझने में. ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये कार्बोनिक एसिड इज व्हाट? इट इज नथिंग बट अ रीजन फॉर ओशन एसिडिफिकेशन. Am I clear? समझ में आया कि नहीं? यहां तक क्लियर तीनों चीजों? कुछ पूछना है फटाफट पूछो. एवरीवन, एयर, सॉइल एंड वाटर में कुछ पूछना है आपको? दिस इज बेसिकली एग्जांपल. मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं कि अगर कोई भी चीज सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर या एयर के अंदर उसके कंस्टिट्यूएंट में चेंज कर दे, उसकी प्रोपोर्शंस में चेंज कर दे, सो दैट जो उसकी कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए, तो इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज pollution. Process of pollution is a destructive properties. Right? Pollution से कभी सृजन नहीं होगा, हमेशा डिस्ट्रक्शन होगा.
right? Up, if we talk about air pollution, start with air pollution. जैसे जब हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, it is of two types: solid pollutant caused by two types: solid pollutant and gaseous pollutant. Talking about solid pollutant, it can be particulate matter. It can be fly ash. It can be soot. It can be a radioactive substances. And when talking about gaseous pollutants, it can be oxides of carbon, sulfur, or nitrogen. Primarily, we all know that during the burning of or combustion of what? Burning or combustion of fossil fuels. ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? अगर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल हो रहा है, देन व्हाट विल बी रिलीज्ड? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, oxides of nitrogen, and oxides of sulfur is released primarily. Right? Which will lead to what? Which will lead to the air pollution primarily. Getting it? In radioactive in a solid pollutant, we can also include microplastics. अभी मैं इस पर डिटेल बताऊंगा आपको. वेरी इंपॉर्टेंट है माइक्रोप्लास्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो अब समझते हैं इसको. ओके, यहां तक कुछ पूछना है? फटाफट बताओ पहले. आस्क मी इफ यू वांट टू, बट आई कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड. बताओ फटाफट, कुछ पूछना है इसमें? इन एनीथिंग, एनीवन? सर, यस सर वो जो सॉलिड का प्रोपोर्शन बताया ना, वो वाला फिर से एक बार बता दीजिए. सॉलिड का प्रोपोर्शन कहाँ पर? एयर में? हाँ सर, कुछ बता रहे थे, सुनाई नहीं दिया उस टाइम में, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया. यहाँ पर? नहीं, हाँ सर. नहीं नहीं, ये नहीं है सर. हाँ, विच वन? सर और एक स्लाइड पीछे. ये तो डेफिनेशन है, यही होगा. नहीं सर, आगे आगे. हाँ सर, यही है ना? हाँ, तो यही मैंने बताया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज व्हाट? इज द कलेक्शन, या अगर हम एयर बोले, एयर इज व्हाट? एयर इज द कलेक्शन ऑफ प्राइमरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2, राइट? जिसमें नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का या CO2 का या जो भी गैसेस हैं हमारे पास, जेनॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आर्गन,
नियॉन, जो कुछ भी है हमारे पास गैसेस हैं, वो सब एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में। अब उसमें कोई अगर प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है क्वांटिटिवली और क्वालिटेटिवली, तो वो क्या हो जाएगा, इट इज नोन एज पॉल्यूशन। जैसे वही मैं आ रहा हूं, अब सीधे मैं एयर पर ही आ रहा हूं कि आप समझो। यहां पर क्या होगा, जो हमारा एयर है, राइट, हाँ, जैसे सपोज करिए कोई भी पोल्यूशन है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं। पोल्यूशन जो भी है हमारा, हाँ, जो भी हमारा पोल्यूशन है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। क्वालिटेटिव pollution and quantitative pollution। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव पोल्यूशन की, सो व्हाट डज दिस मीन क्वालिटेटिव पोल्यूशन? समझो, जब हम क्वालिटेटिव पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या इट मींस, सॉरी, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, right? Quantitative, it means when the proportion of substances are increased। मैंने जो बताया आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल CO2 के प्रपोर्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, रेडॉन के प्रपोर्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्वांटिटेटिवली इंक्रीजिंग द अमाउंट so that this substance, the increase in the quantity can lead to pollution। it is what quantitative, मतलब ये क्या है, ये मात्रात्मक है, इसकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं। जबकि क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें, इसको हम कहते हैं गुणात्मक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर रहे हैं, और जो क्वालिटेटिव है, राइट, ये आर एंथ्रोपोजेनिक। मीन्स इट इज नॉट नेचुरल बट it is human made, man made। for example, let's take an example, जैसे कि जब सॉइल में हम पेस्टिसाइड्स को मिलाते, जैसे हम हर्बिसाइड्स को मिलाते, जैसे हम DDT को इंक्रीज करते, ये सब क्या है, ये सब जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर क्वालिटेटिव इंक्रीज, राइट। द क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स इज इटसेल्फ अ pollutant, the quality of herbicides all are inorganic in nature। ये उसी तरह से है जैसे आप लोग कोई भी पॉइजन खा लो। अब पॉइजन की क्वालिटी ही क्या है, पॉइजनस है। पेस्टिसाइड्स इट इज इटसेल्फ अ टॉक्सिक इन नेचर, हर्बिसाइड इज इटसेल्फ अ टॉक्सिक नेचर, डीडीटी इज इटसेल्फ अ टॉक्सिक नेचर। सो इसकी क्वांटिटी से नहीं मतलब है, आप जहर की एक बूंद खाओ या जहर
का पूरी बॉटल खाओ, मरना ही है आपको। सिमिलरली it has the quality of a pollutant. A pollutant is always toxic in nature. यहां तक समझ में आया everyone? हाँ सर। Yes. Now this can also be on the basis of form. This can also be said to be, जब हम pollutants को define करें, इट कैन ऑल्सो, अच्छा तुम समझो, इसकी डेफिनेशन नहीं आती है, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा, राइट? अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हो या कोई आंसर ड्राफ्ट कर रहे हो ना, तब ये सब चीजों की मतलब पड़ेगा, वो भी डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ एक्सप्लेन करना है। ओके, पोल्यूटेंट्स कैन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल, primary are they persist or they are persistent, okay, in the form in which they are added. समझ में आया? जिस फॉर्म में ये ऐड होते हैं एनवायरनमेंट में, उसी फॉर्म में ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं। दे आर परसिस्टेंट इन द फॉर्म विच दे आर इन विच दे आर एडेड। एंड फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल, जैसे हमने डीडीटी का एग्जांपल लिया, हमने प्लास्टिक का एग्जांपल लिया, हमने लिया ऑक्साइड्स of carbon, oxides of nitrogen, oxides of carbon, oxides of nitrogen, oxides of sulfur, है ना? ये जैसे जिस फॉर्म में है वो अपने आप में ही एक पोल्यूशन है। ये है प्राइमरी पोल्यूशन। नाउ व्हाट अबाउट सेकेंडरी? सेकेंडरी का मतलब क्या हो जाएगा? They are sourced from primary. जैसे नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड से जब सल्फ्यूरिक एसिड्स का बनना, और इस सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनेगा? एसिड क्लाउड्स बनेंगे, and this acid cloud will lead to what? Lead to acid rain. समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? समझो, है ना? ये क्या है? ये है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। कोई दिक्कत? प्राइमरी जो जिस फॉर्म में है वैसे ही आ जाए, सेकेंडरी जो चेंज हो जाए। नाउ व्हाट अबाउट पर्टिकुलेट मैटर? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज पर्टिकुलेट मैटर? एनीवन? नन्या, अंकिता, राजन, मंजिया, हरेंद्र, सोमला, प्रताप, मुन्नी, बताओगे मुझे आप क्या है पर्टिकुलेट मैटर? एनीवन? सर डस्ट ये सबको बोलते हैं, जो सॉलिड और yes, very good. The suspended particles, जो एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पर्टिकुलेट मैटर। सच एज, फॉर एग्जाम्पल, आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया, सच एज डस्ट, सच एज
अभी मैं बताऊंगा आपको सूट के बारे में, व्हाट इज सूट, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर हम इसके सोर्स को देखें तो जो इसका सोर्स है पर्टिकुलेट मैटर का, वो क्या है? वो है दो चीजें। पहला है अनबर्न फ्यूल। नाउ दिस अनबर्न फ्यूल जो है, ये आपका आ रहा है कहां से? इट कैन बी फ्रॉम इंडस्ट्री, इट कैन बी फ्रॉम ऑटोमोबाइल, it can be from oil refineries। मतलब इसको हमने इंडस्ट्री में डाल दे अगर हम, तो ये क्या है? ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री से ही जो निकल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? अनबर्न फ्यूल। प्राइमरी सोर्स ये होता है, राइट? क्लियर? अब समझो, इसी के पर्टिकुलर जो हमारा पर्टिकुलर मैटर है, अगर इसकी हम साइज को देखें, ओके, तो जो इसका साइज है, अगर उसके डायमीटर को हम देखें, तो ये 1 से लेकर 50 माइक्रॉन्स तक हम इसके साइज को मेजर कर सकते हैं। राइट? ये 1 से छोटा भी हो सकता है, इट कैन बी 001 से लेकर 500 माइक्रॉन्स तक भी इसको हम कह सकते हैं, माइक्रोमीटर्स तक। जब हम माइक्रोमीटर्स की बात कर रहे हैं, इट मींस इट इज 10 टू पावर -6 तक है, ये लाई करेगा। बट अगर इसको हम थोड़ा सा और क्लासिफाई करें, कि जब हम पर्टिकुलेट मैटर को कंसीडर करते हैं, इसको हम कहते हैं पीएम पार्टिकल्स। नॉर्मली सुना होगा आपने पीएम पार्टिकल्स, पर्टिकुलेट मैटर्स। जब हम लोग AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करते हैं, उसमें हम पीएम पार्टिकल्स को भी लेते हैं ना। पीएम पार्टिकल्स, इसको हम कह सकते हैं कि ये दो टाइप का है, अप टू 10 माइक्रॉन्स या अबव, एंड लेस देन 2.5 माइक्रॉन्स। इसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में PM10, और इसको हम कहते हैं PM2.5। ना समझो क्या है, जो PM10 है हमारा, दे आर बिग इन साइज। So they can suspend, they are suspended in air. But PM2.5 जो हैं, they are very smaller in size. What will happen? They are very smaller in size. इससे क्या होगा? They can be, they are what we say, they are such small that they can enter into body by process of breathing। जब आप इनहेल कर रहे हो, तब ये क्या हो जाएगा? ये पीएम पार्टिकल्स जो है, जो विच आर लेस देन 2.5, ये आपकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, आपके बॉडी में जो नोज है, उसमें जो नेजल हेयर्स हैं, दे वर्क एज अ फिल्टरेट, एज अ फिल्टर, नॉट फिल्टरेट, एज अ फिल्टर फॉर दीज पार्टिकल्स। बट PM2.5 is much smaller, that it cannot be filtered out by the nasal hair, and it enters into the body
बाय अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, और उससे क्या होगा, दे गेट डिपॉजिटेड इन लंग्स। आपके लंग्स के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट, लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिजीजेस such as asthma, bronchitis, etc. ठीक है। Now, according to Pollution Control Board, CPCB, Central Pollution Control Board, right, ये जो PM 2.5 है, they are more persistent or they are more responsible right, this PM 2.5 for responsible for human responsible for destruction in destruction of human health। समझ पा रहे हो आप? आपकी बॉडी के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल है ज्यादा। PM 10 उतना नहीं है, लेकिन PM 2.5 is much more responsible for this। Am I clear? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? फटाफट बताओ। और आज आपकी क्लास रोल हो चुकी है YT पर, you can see over there, okay? आपकी क्लास जो है वो रोल हो रही है YT पर, so you can see। Am I clear? यहां तक? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, हाँ, and to ask? Okay, sure. Okay. Now, what about this PM 10? PM 10 are also a pollutant. It is also a pollutant, but less harmful to the human health directly. How? Kaise? See, these are filtered out by the nasal hairs, your nasal hairs, and they are not, they are bigger enough to enter into your body, but indirectly it is also a pollutant. How? Let us see. These are suspended in the air and they are deposited on various layers, various surfaces। ये वॉल पर, बिल्डिंग्स पर, ह्यूमन स्किन पर डिपॉजिट हो जाता है। तो ह्यूमन स्किन पर अगर डिपॉजिट हुआ तो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस। अगर ये डिपॉजिट हो गया कहां पर? अगर ये डिपॉजिट हो गया आप कहां पर? आपके लीव्स पर, प्लांट्स के लीव्स पर डिपॉजिट हो गया। सो प्लांट लीव, ये प्लांट की लीव है, अगर कोई लीव है, राइट, वी ऑल नो दैट द प्लांट रेस्पायर थ्रू a respiratory pores known as stomata, है ना? इस स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करते हैं? वो रेस्पायर करते हैं। आप समझना, इस स्टोमेटा के थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। अब अगर क्या हो कि ये इस पर डिपॉजिट हो जाए तो क्या हो जाएगा? दिस स्टोमेटा, इस स्टोमेटा पर ये डिपॉजिट हो जाए तो क्या होगा? स्टोमेटा में रेस्पिरेशन होती है, and we know that the plant during process of respiration they take CO2 and they release oxygen।
तो अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, अगर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये हैम्पर हो गई, ये रिड्यूस हो गई, सो क्या होगा, अमाउंट ऑफ CO2 विल इंक्रीज एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज. When amount of CO2 will increase, which will lead to what? Heat trapping, which will lead to what? Increase of terrestrial radiation, which will lead to what? Which will lead to global. समझ में आया? But Please global, explain this once more, sir. which one? This one? The last slide. Last slide. Last slide. About the plants. Plants, right? See what happens, the leaves respire through stomata, and during the respiration of a plant or a tree, right, what happens, they take CO2 and they exhale oxygen. Human beings respire to take oxygen and exhale CO2, but plants inhale CO2 and release oxygen. What happens if these particles, these suspended particles, deposit on the leaves? When they deposit on the leaves, the stomatas, the pores are filled with these particles, due to which they cannot respire. And when they cannot respire, the respiration process will decrease, and by which the amount of CO2 in the atmosphere will increase and oxygen level will decrease. When the oxygen level will decrease, it means what will happen? अब जो human being या animals respire कर रहे हैं, they will not get enough amount of oxygen. The primary source of oxygen for animals and for human beings, other than for human beings, are we get from the process of photosynthesis. The primary source of oxygen is photosynthesis. Okay, now what happened if the photosynthesis stops? The oxygen will what? Will be reduced in the atmosphere, which will lead to suffocation, which will lead to breathing problems, etc. in animals and human. And if CO2 will increase, it will lead to terrestrial radiation, increase of terrestrial radiation, increase of heat trapping, which leads to indirectly global. This heat also will increase the regional temperature. And due to this regional temperature, the temperature of saline water increases, by which the carbonates and bicarbonates, they try to react with hydrogen, जो H2O में हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, which will lead to what? Which will lead to the formation of H2CO3, which is what? Which means जब हम H2 का increase कर रहे हैं, which means the pH value will increase. अभी मैं बात करूंगा pH value की. It means it is acid, carbonic acid, right? It means that the water is now converted to acid, and this process is known as ocean acidification. समझ में आया? ये तो हो गया ग्लोबल फिनोमिना.
और ये हो गया रीजनल फिनोमिना। Am I clear? सर Yes. आपने तो बोला रीजनल फेनोमेना, तो इज इट कवरिंग द एंटायर ओशन? दैट्स Exactly. व्हाई It can cover the entire ocean, but a portion of this, not the entire Pacific Ocean or Atlantic Ocean, but a specific portion of that particular ocean. ओशन एसिडिफिकेशन इज नॉट अ ग्लोबल फिनोमिना कि वो पूरे पूरे ग्लोब पे इफेक्ट डालेगा। सिमिलरली ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो नॉट अ ग्लोबल फिनोमिना, बट इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो होगा वो ग्लोब पूरे की पूरे ग्लोब पर पड़ेगा। बट ओशन एसिडिफिकेशन विल be visible, the effects of this will be visible in a smaller area, in a smaller region, not in the bigger phenomena or a bigger region like a globe or a worldwide or the entire ocean। किसी ओशन के छोटे से पोर्शन पर वो हमें दिखेगा जहां पर भी टेम्परेचर राइज करेगा। समझ में आया? क्लियर? Now this is the basic consequence of this of a particulate matter। ये मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। नाउ वन थिंग मोर, this PM 2.5, not PM 2.5, about PM 10, right? this PM 10 जो है हमारा is also a dust particles, example of dust particles etc, कुछ भी होते हैं यहां पर समझिएगा। they are suspended and they have a property of hygroscopic nature, राइट? इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। नाउ व्हाट इज दिस हाइग्रोस्कोपिक नेचर? anyone can tell what is hygroscopic? हाँ, बता, what is hygroscopic? सर विच attracts moisture? Yes, very good. Which attracts, right? Now what happens when this moisture contains some acids? What happens? It means that any hygroscopic nature is attracting moisture. But if acid is present, what will happen? The same thing, this hygroscopic nature or the hygroscopic nuclei, PM10 is or dust particles are said to be hygroscopic nuclei. They are responsible for the formation of cloud. क्यों? क्योंकि ये जो क्लाउड, ये जो हमारा डस्ट पार्टिकल है ना, ये अट्रैक्ट करेगा मॉइस्चर को, और मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते करते क्या बनाएगा, ये क्लाउड बनाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर ये जो हमारा पर्टिकुलर मैटर है, उसमें जो मॉइस्चर है, उसमें उसके साथ में उस एनवायरनमेंट में, उस रीजन में एसिड मिल जाए, तो क्या बनेगा, हमारे पास क्लाउड बनेगा। उस क्लाउड में क्या होगा, मॉइस्चर होगा, और उस मॉइस्चर में क्या होगा, एसिड होगा। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको एसिड रेन के फॉर्म में, मैंने बताया भी था आपको। अब जब ये कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, इट विल प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ, और इसे हम क्या बोलेंगे, एसिड क्लाउड्स। एसिड रेन इज ऑफ टू टाइप्स, वेट डिपॉजिट, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, आपको प्रीवियस क्लास को देखना पड़ेगा, एंड ड्राई डिपॉजिट। Okay, this is second consequence of particulate matter.
समझ में आया? यस और नो एवरीवन? लास्ट स्लाइड सर, लास्ट स्लाइड एक बार दिखाइए सर। ये वाला, दिस वन। यस सर। नोट डाउन कर लो। सर हम्म सर ये जो PM 2.5 जो है ना वो लिप्स में वो भी इंटर करती है क्या? नहीं, वो एंटर नहीं कर पाएगी। करेगी, अच्छा। बिल्कुल सस्पेंडेड है, करेगी, बट ज्यादा जो वो उसका साइज इतना छोटा है ना कि वो स्टोमेटास को जो है, हमारा स्टोमेटा है, उस पर कोई खास जी असर नहीं दिखाएगा। आप समझो ना, 2.5 माइक्रोमीटर का है, तो वो करेगा, बट वो, आप देखो, आप हमारी बॉडी में देखो, हमारी बॉडी के ऊपर जो डिपॉजिट हो रहा है ना, वो 10 हो रहा है, PM10 हो रहा है। बॉडी जी के अंदर जा रहा है कौन सा? PM2.5। तो अगर ये लीव्स के अंदर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो लीव्स की इंटरनल प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अबाउट अबाउट CO2, अबाउट ऑक्सीजन लेवल, उस टाइम पर PM10 ज्यादा इफेक्टिव होंगे रादर देन PM2.5। यस ओके थैंक सर यू। ये वेट है, ये तो ड्राई होगा ना डिपोजिशन? कौन सा? ये जो लास्ट स्लाइड आप पढ़ा रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लाउड। मैंने ये बताया, एसिड रेन जो होगा, एसिड रेन इज ऑफ टू टाइप्स, वेट डिपोजिशन एंड ड्राई डिपोजिशन, राइट? मैंने बताया एसिड के बारे में, जो एसिड के पार्टिकल्स हैं वो जो डिपॉजिट हो रहे हैं। पता आप समझ में आ रहा है? मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस क्लास में, जब मैंने बताया था एसिड रेन के बारे में, कि जो इसकी डिपॉजिट, जो इसके पार्टिकल्स हैं, वो दो टाइप से डिपॉजिट हो रहे हैं। अगर अगर ड्राई एनवायरनमेंट में डिपॉजिट हो रहे हैं, इट इज ड्राई डिपोजिशन। अगर वेट में हो रहे हैं तो इट इज वेट डिपोजिशन। क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर। जो रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है, उसमें एक डिजीज और भी है, मैं उसका नाम लिख दे रहा हूं। इट इज नोन एज न्यूमोकोनियोसिस या न्यूमोकोनियोसिस। The respiratory disease caused by inhalation of dust. It is known as pneumoconiosis. Pneumoconiosis. इस टर्म को याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है। Pneumoconiosis led by inhalation of dust particle. Right? प्रॉब्लम सारी यही है। It is also a type of respiratory disease. Am I clear? चलो, तो चलिए आज के इतने रखते हैं। ओके, आई होप समझ में आया है। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। राइट, ये सारा कंटेंट जाएगा आपके पास, एंड वीडियो अपलोड हो रही है आपकी, so you can see over there. Okay, चलो, so till then